Good morning, dear students. Hearty welcome to BPHES CSRD Institute of Social Work and Research online social work lectures, method course 1, social casework. Today our topic is unit 3, process, social casework process. व्यक्ती सहकार्याच्या प्रक्रिया. The previous classes we have learned history, concept, values and principles. And today we are going to study the process. Casework process has 6 steps. We have studied this process in the first lecture in brief as part of the component person, problem, place and process. There we studied the important aspect of the process, that is study, diagnosis and treatment. Today we are going to study them in detail. As I have mentioned earlier, this is the most important part of social casework. So we have 6 steps in the casework process. The first one is study, second one is continuous assessment and analysis, third one is psychosocial diagnosis, clinical and social or etiological diagnosis, fourth steps intervention, fifth step follow-up, and the sixth step termination. Let us discuss the first step, study. What is study? Study means fact finding. We had discussed this little elaborate earlier, however, I want to revise it again. Study is the first step where the caseworker tried to understand the personal background of the client, the socio-economic, cultural, educational, occupational background of the person. So in study, the caseworker start inquiring about the development of the problem, his or her relationship, neighborhood, his past, his present, his future aspirations. So it is all about data collection. It's all about gathering the basic information, the background information. Unless we understand the person in his or her environment in detail, casework cannot begin. So in this step, there is a need for rapport building, trust building, a kind of confidential relationship, professional, purposeful relationship. There is a need for a kind of trustworthy interaction between the client and the caseworker. Therefore, the client start or the caseworker start befriending the client. The client start building up a very personal as well as purposeful relationship with the caseworker. The caseworker inquire about the client's family,
about his past education, past employment, and try to understand all the background, all the variables, socio-economic variables that might have contributed to the development of the problem. So this is the first step. And in this step, a kind of case record is prepared by the caseworker. An objective fact sheet, we call it is intake record. And the preliminary interviews, 1, 2, or 3 interviews, casework interviews, are dedicated for the study, where the caseworker tried to explore and find out all the available information about the problem from the client. The casework will be recording it, writing, sometimes recording with the permission of the client, the audio recording or the video recording, so that the non-verbal cues, the things that the client is communicating beyond the words can also be recorded. So all the information that the client wants to tell is disclosed and recorded in this first step, that is called study. Once the client exhausts telling all about him, his background, his problem, then we go to the second step, that is continuous assessment and analysis. In the second step, what happens is the caseworker tries to verify the fact about the information shared by the client. सच को ढूंढना है. So sometimes the caseworker decides to visit the house, visit the neighborhood, visit the school, visit the occupational setting, so that the caseworker can verify whether the client was sharing was true or not. Here comes the collateral interview. Collateral interview means interviewing the family members, interviewing the blood relations. So here, the caseworker continues the study. It is called assessment stage. The gravity of the problem, the scope, the extent of the treatment, and to verify, to determine the depth of the truth of the sharing of the client. So this is very important steps where the study is complete. The study is not complete unless the facts are verified. How can we verify? Verification always comes from the third party. Whatever the client wants to say is completed. Now let me tell you an example. The caseworker identified a school dropout child and befriended the child, talked with him, the initial 1 or 2, 3 interviews with the child. The caseworker tried to understand what the child wants to say, why he is not going to school, उनका घर में कौन कौन है, उनका दोस्त कौन कौन है, वो स्कूल नहीं जाने का कारण क्या है. So the child will tell whatever he wants to say. कभी कभी वो छुपाता है. The child will not tell all the truth. वो कभी कभी स्कूल के बारे में कुछ झूठ बोलेगा, पेरेंट्स के बारे में, घर का वातावरण के बारे में. The child can sometimes fake, sometimes can say the false information. The child may wants to make an impression, so may hide some things. So based on the client's information, child's information alone,
the casework cannot progress. So caseworker will, at one stage, after sufficient degree of trust and rapport has been established, the caseworker will suggest, चलो मैं आपका घर आना चाहता हूँ, आपको पेरेंट्स को मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे टीचर को मिलना चाहता हूँ, मुझे भी लेके जाओ. कभी कभी the child will be afraid. If the child has told something wrong, child will not give permission. नहीं अभी नहीं जाना, घर में अभी कोई नहीं है, पापा मम्मी काम के लिए गया होगा, आज स्कूल छुट्टी है, आपको पता नहीं है. The child will not allow the case worker to proceed, to visit his or her house or the school. इसका मतलब है the child has not told all the truth. फिर केस वर्कर को वेट करना पड़ेगा कि जबरदस्ती उसका बिना परमिशन जा नहीं सकते. That will break the relationship. So the case worker is working with the client. So without the permission, so the client, the child has to take him, accompany him to the school or the house. वो स्टेज आएगा और वेट करना पड़ेगा, एक दो विजिट और रखना पड़ेगा, उसके साथ खेलना पड़ेगा, चलो आज हम खेलेंगे, फिर उसके साथ अच्छा दोस्ती बनना पड़ेगा. Once a trustworthy relationship is built, the client will disclose everything about, मुझे है ना वो टीचर पसंद नहीं, मेरा क्लास में कुछ लड़के हैं बहुत मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मुझे हरासमेंट करते हैं, इसलिए मैं स्कूल में नहीं जाना चाहता. मेरे घर में ऐसा परिस्थिति है, वो पापा मम्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो मुझे कुछ पूछता नहीं है, वो सोचता होगा मैं तो हमेशा स्कूल में है, अगर आप उनको मिले तो ये मत बोलो मैं स्कूल में नहीं किया, ऐसा है तो मैं आपको लेके जाऊंगा, कुछ कंडीशनर रखेंगे, एक्सेप्ट करो इनिशियली, फिर आपको उनको घर में जा सकते हैं. सो that kind of environment, trust has to be built, and once the client is ready to take him to his workplace, his school, home, then the second stage starts, then the real assessment stage starts. Then the case worker visits the house, start talking with the parents, ask आप इनके बारे में, स्टडी के बारे में कुछ पूछता नहीं है, आपका चाइल्ड कैसे है, आपको पता है क्या, स्कूल में रेगुलर जाते हैं क्या. और द केस वर्कर विल विजिट द स्कूल एंड इंटरेक्ट विद द टीचर्स. कभी कभी ऐसा होता है द टीचर्स आर वेरी हैप्पी टू सी दैट ये बच्चे के बारे में कोई पूछने को आया है, उसको पेरेंट्स तो आता नहीं, कम से कम कोई सोशल वर्कर आया है. फिर तक टीचर्स विल स्टार्ट टॉकिंग विद हिम, ये कुछ होमवर्क नहीं करते हैं, बहुत कम आते हैं, इसको पापा मम्मी को बहुत बार बुलाया था लेकिन कभी इसको इन्होंने लेके आया नहीं. सो दैट वे द ट्रीटमेंट कैन स्टार्ट. It can, the diagnosis, what is the real problem, that will be identified at one stage of this continuous assessment. So this continuous assessment is very important. That is the stage where all the required facts, all the required information, all the dimensions of these problems are gathered. Now the information about the child from the parents are collected, from the teachers are collected, from his friends. कभी कभी सोशल वर्कर ऐसे ही पूछ सकते हैं तुम्हारे दोस्त लोग कौन कौन है, उससे साथ भी मैं बात करना चाहता हूँ. So all the significant others, all the other stakeholders, all other individuals who are part of this problem, who can contribute to the solution to the problem, they are interviewed, they are met at the second stage, and that is called the fact finding or verification of the facts. Once the information told by the client is verified from the third party, now we move on to the
third stage, that is called the psychosocial diagnosis. So there is two type of diagnosis. Now, this is the important stage where the real problem is identified. ये एग्जाम्पल मैं दोबारा कंटिन्यू करना चाहता हूँ. आप देखते हैं दिस चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू स्कूल. ये तो प्रॉब्लम ही है, स्कूल ड्रॉप आउट. लेकिन इज इट द रियल प्रॉब्लम? आफ्टर गोइंग टू द स्कूल, visiting the parents, there is some insight into the problem. So, what happens? Some new problems coming into being. The caseworker realized that ये बच्चे स्कूल में क्यों नहीं जाते हैं? Parents are not giving care to the studies. Teachers are not giving proper attention. So there are two more problems aroused. Two more problems are identified. They might be more serious than the problem which was earlier identified. So there can be lack of motivation on the part of the student. So we have identified three reasons behind the problem of school dropout. So this identification of the root cause, this identification of the real problem, it is called the diagnosis. So now we keep away the apparent, the superficial problem, which is the school dropout. The child is not going to school. The student is out of the classroom. वो बाजू में रख दिया. अभी आपके सामने दूसरा 3 प्रॉब्लम आ गया. Parents negligence, teachers negligence, lack of motivation. ये तीनों समस्या सामने आ गया. अब इसी के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा. So in diagnosis stage, you fix the real problem. As the doctor, fix the problem after conducting some blood test, after the diagnosis. Only after diagnosis, you can really understand what is the real problem. अभी डायग्नोसिस में भी 2 प्रकार डायग्नोसिस होता है. एक है साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस, उसको बोलते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस. क्लिनिकल डायग्नोसिस में क्या होता है? इट इज मेनली डन बाय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. हाउएवर, medical and psychiatric social workers can also do that clinical diagnosis. इसमें कुछ तो छोटा टेस्ट करना पड़ेगा. जनरली स्कूल ड्रॉप आउट चिल्ड्रन के साथ कौन सा टेस्ट करते हैं? IQ टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं. So this IQ टेस्ट इज अ वेरी सिंपल टेस्ट. IQ टेस्ट सोशल वर्कर अगर उनको पता है नहीं है तो इसको किसी और से करवाना पड़ेगा. एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट, कुछ काउंसलिंग सेंटर से बच्चे का IQ टेस्ट करवा के लेना है. IQ टेस्ट इज ए सिंपल क्लिनिकल टेस्ट. उसमें पता चलेगा द IQ लेवल ऑफ द स्टूडेंट, उसका इंटेलिजेंस क्या है. कभी कभी क्या होता है, स्लो लर्नर्स, उसको दिमाग कमजोर, उसका अच्छे, द चाइल्ड इज बिलो द नॉर्मल इंटेलिजेंस, द चाइल्ड विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन द क्लास. उसका इंटेलिजेंस बाकी स्टूडेंट्स का ऐसा नहीं है जो उसको समझ में आता है स्कूल में क्या चल रहा है, क्लासरूम में क्या पढ़ाते हो. सो दिस क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट व्हेन यू डील विथ एन स्कूल ड्रॉप आउट प्रॉब्लम. आप कितना भी उसको मोटिवेट करो, कितना भी पेरेंट्स का अटेंशन दो, अगर द चाइल्ड का इंटेलिजेंस इज नॉट द नॉर्मल, दैट चाइल्ड विल नॉट get adjusted well in the classroom. उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. We cannot blame the child. If the child is of borderline, if the child's IQ is below 70, the child is not advisable to sit in the same classroom. Can sit but with a lower achievement level. उसका टीचर को समझ में आना चाहिए चाइल्ड का थोड़ा कम, उसका दिमाग थोड़ा कम, इंटेलिजेंस IQ लेवल इज लोअर.
उसको बाकी लोगों को जो सिलेबस है ना, सेम सिलेबस इसको पढ़ा नहीं सकते। गवर्नमेंट को उसको भी उसमें कुछ कंसेशन दिया हुआ है, दे नीड नॉट कवर द एंटायर सिलेबस, सो दे शुड बी ट्रीटेड as, we cannot say exactly special child, but their special attention need to be given. There should be some remedial coaching, there should be some additional attention required on the part of the parents or some social worker, क्योंकि उसका IQ level is lower. So this IQ assessment, that is the clinical diagnosis. Clinical diagnosis also include conducting some higher level test to understand other psychological problem, maybe a depression or bipolar disease. There are different other disorders, psychological disorders, which may be identified by the help of this clinical diagnosis. So clinical diagnosis is one part of the diagnosis, okay, but that is generally done by psychologists, clinical psychologists, educational psychologists, मेडिकल एंड साइकाट्री सोशल वर्कर्स, उनके मदद के द्वारा. सो दिस डायग्नोसिस इज अ टीम वर्क. इट इज नॉट सोशल केस वर्कर alone does this diagnosis. He may require the help of a doctor, physician, psychologist, education psychologist. So उनके मदद से ये क्लिनिकल टेस्ट, क्लिनिकल डायग्नोसिस पार्ट उसी से करवा कर लेना है. द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड सोशल डायग्नोसिस. इसके बारे में हम बात किया था जब मेरी रिचमंड का सोशल डायग्नोसिस किताब के बारे में हम हिस्ट्री में बात किया. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द सोशल डायग्नोसिस. इट इज ऑल्सो नोन एज इटियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल डायग्नोसिस. ये समस्या कब से शुरू हो गया, कितना साल से स्कूल ड्रॉप आउट है, कितना दिन से स्कूल से नहीं जाते. वो दैट इज सम हिस्टोरिकल डायग्नोसिस में पेरेंट्स से बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे, पता चलेगा ये बच्चे तो पिछले साल भी ऐसे था, अभी और प्रमोशन है, ये कुछ स्टडी नहीं किया फिर भी मैं इसको प्रमोट किया है, 3 साल से स्कूल में नहीं आ रहे. इसका मतलब है 3 साल से कुछ स्टडी नहीं हुआ है. अगर एक 5वीं में पढ़ते हैं उसका स्टडी लेवल दूसरा कक्षा का होगा, 2nd क्लास का लेवल में है. अभी दिखते हैं 5th में, स्टडी तो 2nd लेवल में. सो दिस सोशल डायग्नोसिस विल अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द प्रॉब्लम. कब से शुरू हो गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायग्नोसिस. इससे पता चलेगा ट्रीटमेंट कब से शुरू करना पड़ेगा. अभी इसको क्लास 5th का पढ़ाने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसका क्लास 2 का लेवल का है. क्लास 2 का किताब पहले पढ़ाना पड़ेगा, फिर तीसरा, फिर 4th, उसके बाद 5th आएगा. सो दिस गिव्स यू द सोशल वर्कर को पता चलेगा इसका ट्रीटमेंट आगे का स्टेप क्या होना चाहिए, आगे में इसको कैसे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. सो दिस फ्यूचर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट ये डायग्नोसिस से पता चलता है. सो डायग्नोसिस में गोल सेटिंग, इसका ट्रीटमेंट आगे क्या होना है, ये डायग्नोसिस तीसरा स्टेप में फिक्स करते हैं. अगर क्लिनिकल टेस्ट में पता चला इसका IQ लेवल कम है, फिर उसको हम टीचर को बताएंगे, पेरेंट्स को, आपने कभी भी इसका IQ टेस्ट नहीं किया है, हम ट्राई किया है, इसका IQ ये बॉर्डरलाइन में, इट इज़ बिटवीन 70 to 80. यू डोंट एक्सपेक्ट हिम फ्रॉम हिम एज द रेगुलर स्टूडेंट्स. उसका अचीवमेंट उतना हो नहीं सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छे इंडिविजुअल है. You can achieve so many things in life. इसका जिंदगी IQ के ऊपर नहीं है. He can be a very useful person, but उसमें इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो. उसको सिलेबस थोड़ा सिंपल होना चाहिए. अगर चाहिए तो इसको स्पेशल स्कूल में भी डालकर दे सकते हैं, उधर उसको एक्सेल हो सकता. अगर रेगुलर स्कूल में हो सकते हैं, लेकिन टीचर्स हाउ टू गिव हिम स्पेशल अटेंशन. सो दैट इज द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. वो ट्रीटमेंट में आएगा. वो ट्रीटमेंट देखो, काउंसलिंग द पेरेंट्स, काउंसलिंग द टीचर्स, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोशल केस वर्क. केस वर्क इज नॉट ओनली डीलिंग विद द क्लाइंट, उसका एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन वो नेक्स्ट स्टेप में मैं बताने वाला हूँ. सो
क्लिनिकल डायग्नोसिस देन सोशल डायग्नोसिस. सोशल डायग्नोसिस में पता चलेगा कितना दिन से, कितना साल से, कितना महीने से, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस प्रॉब्लम, ये कब से शुरू हो गया, etiological analysis. So that is the diagnosis. Once diagnosis is over, we can very clearly understand what is the real problem and what should be the real solution. What should be the goal for social work? ये केस वर्क कहाँ तक लेके जा सकते हैं, इसको क्या सुधारना चाहिए, कहाँ, where is the intervention required, that will be found out in the third stage of psychosocial diagnosis. Now we come to the fourth stage, that is intervention, उपचार, treatment. Now intervention में क्या है? Intervention, there are two type of intervention: individual intervention, environmental modification. So individual level का intervention को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं behavior modification. We are taking the example of the child school dropout. उसका जो behavior में क्या बदलाव लेके आना चाहिए, what should be the changes which has to be brought in the child's lifestyle. That is the individual level intervention. Environmental modification is working with the family and the school, friends, neighborhood. उसका वातावरण के साथ जो काम करेगा, that is the environmental modification. Now we have completed the study, continuous assessment, the diagnosis. At the diagnosis level, we have identified the real problem. The real problem is negligence of the parents, negligence of the teachers, and maybe poor intelligence, which we identified through the clinical diagnosis. Through the social diagnosis, we also came to know ये 3 साल से ये habit शुरू हो गया है. So now we have fixed the real problem. अभी हमें पता चलेगा, we need to now work with the child. उनको भी बताना पड़ेगा, उसमें ध्यान, उसके एजुकेशन में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. The child need more motivation. And with regard to the environmental modification, the case worker understood इसके चाइल्ड के साथ नहीं, उसके पेरेंट्स के साथ भी काम करना पड़ेगा, उसके टीचर्स के साथ भी काम करना पड़ेगा, उसका दोस्तों के साथ भी काम करना पड़ेगा, उसका बिहेवियर में बदलाव लेके आना पड़ेगा. सो दैट इज द एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन. फिर इसको काफी टाइम लगेगा, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने का काम है अभी. नाउ द रियल केस वर्क बिगिंस हियर. अब इसमें बच्चे के साथ भी काम करेंगे. देखो बेटा, तुम्हारा पापा मम्मी तुम बहुत प्यार करते हैं, अगर तुमने कुछ साल के लिए, कुछ दिन के लिए आपके अटेंशन नहीं दी, क्योंकि उसमें उसका काम में बहुत बिजी था. अभी देखो वो बदला हो गया है. अभी वो आपको पूछने वाला है, आपको स्टडी के बारे में पूछने वाला है. दे आर गोइंग टू चेंज. तुम तैयार हो जाओ स्टडी के लिए. तुम्हें क्या दिक्कत है, मुझसे डिस्कस करो, तुम्हारा पापा मम्मी से डिस्कस करो, तुम्हारा दोस्त से भी डिस्कस करो. अगर स्टडी में कुछ समझ में नहीं आ रहे, अभी मैं आपका टीचर्स को भी मिलने वाला है, उसके साथ भी वो भी आपको ज़्यादा अटेंशन देने वाला है. उसको ये नहीं बताओगे आपका दिमाग कमजोर है, वो रिजल्ट आपके पास छुपा के रखना है. वो टीचर के लिए है, पेरेंट्स के लिए, इनके लिए नहीं है. कि जिंदगी में जो लोग बड़ा बड़ा काम किया है, सारे हाई आईक्यू वाला नहीं. आईक्यू और लाइफ स्किल आर डिफरेंट. achievement in life is not corresponding with the IQ of the child. जिंदगी में बहुत बड़ा पाने वाले लोग सारे बड़े आईक्यू वाले नहीं है. बहुत सारे स्कूल ड्रॉप आउट लोग हैं, बहुत बड़े काम किया है. आइजैक न्यूटन, अभी फेसबुक का जो फाउंडर है, माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर है, गूगल का, सब बड़े बड़े अभी जो सक्सेस हो गया ना, ये लोग सारे स्कूल में बड़े
अचीवमेंट किया नहीं, दे आर नॉट सो हाईली IQ लेवल, सो वी नीड नॉट शेयर द IQ विद द चाइल्ड, वो डिमोटिवेट हो जाएगा। बट उसको ये बता से कम मिनिमम तो इतना तो कर सकते हैं, तुम्हें कम से कम रीडिंग राइटिंग तो हो सकते है तुम्हारा। सो बेसिक स्किल्स, लिविंग स्किल, लाइफ स्किल आपका, यू हैव टू डिफाइन द एजुकेशन फॉर द चाइल्ड डिफरेंटली, नॉट दैट एजुकेशनल अचीवमेंट सारे A ग्रेड होना, दिस शुड नॉट बी योर गोल एजुकेशनल हॉल, बिकॉज यू नो दैट इसका IQ लेवल कम है। इसका एजुकेशन में क्या होना चाहिए, ही शुड नो व्हाट टू रीड, हाउ टू रीड एंड राइट, बेसिक नॉलेज मिनिमम पास तो होना चाहिए, मिनिमम स्टैंडर्ड रखो। फिर वो भी अरे इतना तो हो गया, एक्सरसाइज में चले 3-4 तो हो गया, अरे दिस इज एक्सेलेंट, बहुत सारे बच्चे को इतना ही पता, मुझको भी इतना ही पता था तुम्हारे लेवल में, आगे चलो बाकी सब्जेक्ट का देखो। सो मिनिमम सिलेबस, मैक्सिमम लाइफ स्किल देखो। नाउ यू शुड कॉन्सेंट्रेट, आप जिंदगी में क्या करने वाला है आप डिसाइड करो। सो सम गोल्स, गिव हिम सम गोल्स फॉर एजुकेशन, इतना बड़ा गोल्स भी देने की जरूरत नहीं, इंजीनियर डॉक्टर, अरे यू कैन ऑल्सो बिकम ए गुड एक्टर, यू कैन बिकम ए टेक्नीशियन, यू कैन बिकम ए गुड ड्राइवर, मैकेनिक। सो उसको भी you can give him an achievable goal. That is also part of education. This is also part of motivation. इसके लिए अभी उसको आपको पता चला इसका IQ लेवल कम है, then ऐसे ओरिएंटेशन पेरेंट्स को देना है। I don't expect so much from his studies, but this child is very sincere, honest. He can do very good in agriculture, farming, so mechanical, some को तो शायद IT लेवल में, टेक्निकल लेवल में अच्छा काम करेंगे। आर्टिस्ट, ये बहुत आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट स्किल अच्छा है। सो बट डोंट एक्सपेक्ट हिम वेरी हाई अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स, साइंस, so because by nature his IQ level is already identified, but like you show him love, उसको प्यार दे दो, उसको अटेंशन दे दो, डोंट नेग्लेक्ट हिम, एक्सेप्ट हिम, मेक हिम इंपॉर्टेंट इन द फैमिली, ही इज गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट सो मच टू योर वेलबींग इन फ्यूचर। ये बहुत अच्छा काम के हो जाएगा, ही इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल पर्सन। सो you have to reorient the parents and make some attitudinal change in the parents. That is environmental modification. जैसे टीचर्स के साथ भी केस वर्क करेंगे, उसको भी बताएंगे आपने कभी इसका IQ लेवल टेस्ट नहीं किया है, हमने IQ टेस्ट किया, पता चला इसका IQ थोड़ा कमजोर है। So don't expect him that he is going to do as good as other students. इसके लिए थोड़ा स्पेशल एजुकेशन आपको देना पड़ेगा, इसका थोड़ा मिनिमम स्टैंडर्ड रखो, उसको अप्रिशिएट करो। जब वो कुछ तो किया है करके दिखाए आपको, अप्रिशिएट करो, सो दैट द चाइल्ड विल फील दैट ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द क्लास। मैंने इतना सारे 100% किया नहीं, मैंने 40% तो किया, फिर भी मेरा टीचर को मुझे बोलते हैं वेल डन, तुम अच्छा किया है। सो that way some change in the attitude of the teachers. This is environmental, this is the part of intervention. इतना तो हो गया, then the child will start going to school. उनको पता चल रहे, टीचर्स भी मुझे ध्यान दे रहे, मैं थोड़ा कम किया तो भी, पूरा काम नहीं किया तो भी टीचर कुछ चिढ़ाए नहीं है, the teacher has appreciated me, so मुझे जा सकते हैं क्लास में। Sometimes that inferiority made the child skip the class. अभी उसको कॉन्फिडेंस आ गया, मैंने तो इतना ज़्यादा नेट किया तो भी क्लास में मेरा दोस्त है, दोस्तों के बात करेंगे, ये बहुत अच्छा कलाकार है, देखो कितना अच्छा खेलते हैं, सिंगिंग कितना अच्छा है, कितना अच्छा ड्राइंग करते हैं, कितना अच्छा लड़का है, तुम्हारे साथ ले लो, इतना स्टडी नहीं किया तो भी बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत काम का आएगा ये लड़का। So something you have to work with the friends, so that
he will get a comfortable society. He will feel comfortable in the society. He will feel at home in the school. जैसे वातावरण उसको चेंज करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केस वर्क. केस वर्क में ज़्यादा सोशल वर्क एनवायरमेंट के साथ होता है, बिकॉज वी बिलीव दैट दिस इज नॉट इंडिविजुअल प्रॉब्लम. स्कूल में नहीं जाते हैं, दैट इज नॉट हिज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. दिस कुड बी ए सोशल प्रॉब्लम वेयर वी हैव टू वर्क विद द सोसाइटी, द नाइबरहुड, द स्कूल, विद द पेरेंट्स. वहाँ वातावरण में थोड़ा सा बदलाव आ गया, द चाइल्ड विल परफॉर्म बेटर. द चाइल्ड विल गेट better adjusted in the school and the home. Only working with the child may not bring that result. That is the main difference between psychological counseling and case work. कभी काउंसलर क्या होता है, बच्चों के साथ काम करते हैं, वो पेरेंट्स के साथ काम नहीं करेंगे, स्कूल के साथ काम नहीं करेंगे. स्कूल के साथ काम करना, पेरेंट्स के साथ काम करना, उसके फ्रेंड्स के साथ काम करना, दैट इज केस वर्क. तब वो केस वर्क हो गया. So that is the intervention. It may take 3-4 months. अगर आपने अच्छी तरह केस वर्क किया, then you will find good result. फिर आपको नेक्स्ट स्टेज में आ गया, that is follow up. Follow up is collecting feedback from the child. अभी तुम्हें कैसे लगते हैं, स्कूल जाना अच्छा लगता है? कलेक्टिंग फीडबैक फ्रॉम द पेरेंट्स. अभी तुम्हारा लड़का कैसा है, स्टडी में ध्यान दे रहे हैं क्या, उसमें खुश होता है कि स्कूल में जाना. कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम द टीचर्स. अभी वो रेगुलर आते हैं क्या, टीचर्स बताएंगे हाँ अभी थोड़ा रेगुलर हो गया, अभी रेगुलर आते हैं, मैं उसको थोड़ा ज़्यादा अटेंशन देता हूँ, उसको मैं पहले जैसा उसको गुस्सा नहीं करता हूँ, उसके होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो भी मैं उसको पैर से समझाते थे, ओके हो गया तुम्हारा 30% हो गया तो ठीक है, वैसे मैं उसको. सो यू विल अंडरस्टैंड दैट द पेरेंट्स आर गिविंग गुड फीडबैक, टीचर्स आर गिविंग गुड फीडबैक. आप उसका दोस्तों को भी पूछ सकते हैं कैसे हैं, वो खुश है क्या तुम्हारे साथ खेलने के लिए, तुम्हारे साथ अच्छा काम करते हैं, बात करते हैं. सो when you get good feedback from all other stakeholders, then that's a kind of self evaluation. तुम्हारा केस वर्क के बारे में तुम्हें खुद इवैल्यूएशन करना है. So this evaluation is very important before the termination. ये केस वर्क कंप्लीट करने के पहले आपको ये फॉलोअप लेना है. सो फॉलोअप 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आपको पूछना है, पहले स्टूडेंट्स को ही पूछना है तुम्हें कैसे लगता है, अभी तुम्हें स्टडी करना अच्छा लगता है क्या. वो बच्चे बोलते हैं हाँ अभी काफ़ी इंटरेस्ट आ गया, मैं सोचता था ये बहुत मुश्किल वाला दिमाग खाने वाला चीज़ था, मैथ सीखना बहुत मुश्किल होगा, ये पूरा कंप्लीट करना इम्पोर्टेंट है, अभी मुझे समझ में आ गया, पूरा नहीं किया तो भी चलता है, थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आ रहा है, मैं ऐसा नहीं सोचता था ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है, अभी मुझे इंटरेस्ट आ गया. सो दिस इज रिसीविंग गुड फीडबैक फ्रॉम द चाइल्ड. नाउ रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम द पेरेंट्स, रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम द टीचर्स एंड हिज फ्रेंड्स, देन यू कम टू नो यस मेरा केस वर्क सक्सेस हो गया है. नाउ द चाइल्ड इज गोइंग टू कंटिन्यू इन द स्कूल. आई नीड नॉट, नाउ दिस टाइम हो गया विड्रॉवल के लिए, टर्मिनेशन के लिए टाइम आ गया, क्योंकि मेरा काम अच्छा हो गया है. 6 महीने में मुझे पता चल गया इनका काम अच्छा हो गया. दैट चाइल्ड हैज नाउ द चाइल्ड इज गिविंग बेटर अटेंशन टू स्टडी. एंड अगर मैंने उसको फॉलोअप नहीं लिया तो भी रेगुलर होने वाला है, स्कूल में जाने वाला है, पेरेंट्स भी उस पर एजुकेशन में ज़्यादा अटेंशन देने वाला है, टीचर्स भी उसको ज़्यादा अटेंशन देने वाला है. सो now this is the time. So this is a kind of indirect evaluation. Evaluation में पेपर पेन लेकर examination ऐसा कुछ नहीं. It can be very informal. It can be third party assessment. So this is an assessment of your own work. आपने उसके साथ क्या काम किया उसका assessment हो रहा है.
with the help of all the stakeholders. Once you satisfy, yes, मेरा काम मैंने अच्छी तरफ किया है, वो स्टूडेंट तो अभी बिल्कुल अच्छा हो गया है, उसका स्टडी में अटेंशन हो गया है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, सेल्फ एस्टीम बढ़ गया है, बेटर एक्सेप्टेंस हो गया है उसका घर में, उसको स्कूल में. द चाइल्ड इज एम्पावर्ड. द चाइल्ड हैज गॉट बेटर कंट्रोल ऑफ हिज ओन स्टडी, हिज ओन लाइफ. जिंदगी में का खुद का बेटर कंट्रोल आ गया है. दिस आर ऑल केस वर्क गोल्स. These goals you might have fixed at the stage of diagnosis. So all the goals fixed at the diagnosis stage are achieved. Check in the feedback session, in the evaluation stage, whether you have achieved all the goals you have set for the casework. Pura goals achieve ho gaya, then you can come to the next stage, that is the termination. So this termination is the last stage of casework. Now in the termination, there are three things that take place. So one is called referral, the other one is transfer, the third one is closing the case. Let me start with the third one, closing the case. हम लोग अभी उसके बारे में बात कर रहे थे. When you receive good feedback, when others are evaluated, when you have assessed the case as a successful case, yes, ये केस तो बहुत अच्छा हो गया, अभी चाइल्ड तो रेगुलर स्कूल होने जाना शुरू कर दिया, अटेंशन स्टडी में देना शुरू कर दिया, then we can say this is a successful termination, सक्सेसफुल क्लोजिंग ऑफ द केस. एक केस तो अच्छी तरफ कंप्लीट हो गया है, अप टू योर सेटिस्फैक्शन, अप टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द चाइल्ड एंड अप टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द चाइल्ड्स पेरेंट्स एंड द टीचर्स. सभी के सेटिस्फैक्शन में ये केस अच्छी तरह क्लोज हो गया. यू नीड नॉट वरी, पेरेंट्स नीड नॉट वरी, टीचर्स नीड नॉट वरी, द चाइल्ड इज कम बैक टू द मेन स्ट्रीम. वो स्कूल में अभी रेगुलर जाने वाला ही स्टूडेंट है. सो मोस्ट ऑफ द केस वर्क कम टू दिस कंक्लूजन. ये केस वर्क ज़्यादातर पुअर नेबरहुड में होता है, इंडियन सिचुएशन, इन द स्लम्स, द रूरल सेटिंग्स, जहाँ ज़्यादातर आपका केस वर्क बच्चों के साथ होता है. बच्चों के सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्कूल में होता है, स्कूल में अच्छा अचीवमेंट नहीं हो रहा है, स्टडी ठीक से नहीं हो रहा है. दैट इज द मेन प्रॉब्लम. That's why I have been telling this example again and again. केस वर्कर्स ज़्यादातर बच्चों को साथ काम करना है. पेरेंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न बच्चों की एजुकेशन है. वो सोचता होगा ये अच्छी तरफ स्टडी करे, हमारे जैसे काम नहीं करे, अच्छा काम मिलेगा उसको, गवर्नमेंट सरकारी सर्विस मिलना चाहिए, उसके लिए स्टडी. एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द चिल्ड्रन. अगर चिल्ड्रन अच्छा स्टडी कर रहे, पेरेंट्स को तो बहुत खुश हो जाएगा, अरे ये तो जिंदगी में बहुत अच्छी कुछ पाने वाला है, स्टडी तो अच्छा है उसका. दैट्स वाई आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल स्टडी के बारे में. अगर अच्छी स्टडी से आ गया, फिर आपको केस वर्क क्लोज कर सकते. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जितना भी आप काम करें, स्टडी में कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं है. पेरेंट्स तो बहुत अच्छा अटेंशन दे रहे, पेरेंट्स के साथ जो आपने काम किया सक्सेस हो गया. टीचर के साथ भी अच्छा काम कर दिया, टीचर भी ज्यादा अटेंशन दे रहे, फिर भी स्टडी में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहे, आप क्या करोगे? केस वर्क इज ऑलवेज ए शॉर्ट टर्म थेरेपी. अगर 6 महीने तक, मैक्सिमम 1 साल इनके साथ, बच्चों के साथ आपने काम किया, फिर भी आपका काम में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा, फिर भी आपका काम टर्मिनेशन करना ही पड़ेगा. यू कम टू द कंक्लूजन दैट यू हैव बिकम इनएफेक्टिव. आपका जितना भी इंटरवेंशन आपने किया है, ये अच्छी तरफ इसका सक्सेस नहीं होगा. योर intervention is not effective. You have to conclude, you have to come to that conclusion. You need not be disappointed. अगर ये केस तुमसे सक्सेस नहीं होगा, फिर आपको रेफर करना है ये केस
किसी इसका IQ लेवल इतना कम है, इसके साथ तुम्हारा जितना भी मोटिवेशन टेक्निक सक्सेस नहीं होता है. Sometime a psychologist can help. An educational psychologist can come into the picture. इनको थोड़ा हायर लेवल इंटरवेंशन चाहिए. This child may require a better treatment, a better psychiatric intervention. The child आपसे नहीं, you are not the 100% solution for all the problems. Case worker is not the only solution giver. There are many other professionals. So take their help. You refer this case to another professional. You refer this case to a doctor, psychiatrist. So from the casework point of view, it is again a successful case because you have really identified this problem. This problem is really a psychological problem. इसका IQ इतना कम है, इसको तो अच्छी तरफ काउंसलिंग चाहिए, ये काउंसलिंग मुझे नहीं दे सकते. So by giving a proper reference, you close the casework. So casework is successful. You have really identified the problem. This problem require a higher level intervention, and you have successfully referred to another professional who can help the child. So your primary interest is the child's well-being, child's better adjustment in the school and family. वो तुमसे नहीं होता है, दूसरा प्रोफेशनल हो सकता है, उसके साथ रेफर करो, close the case. Don't continue your case for more than 1 year. 1 year is the maximum limit for casework. 6 महीना तो आइडियल होता है. 1 semester, 6 months you tried your level best and you could not achieve the goals which you have set at the stage of diagnosis. Better you refer. So this reference is also a successful culmination of the casework. The casework will continue, but you are not the person to continue the work. You have prepared the case history, आपका केस फाइल तैयार हो गया, वो ट्रांसफर करेंगे, वो रेफर करेंगे दूसरा प्रोफेशनल के पास. And he will study the professional psychologist, psychiatrist, the educational counselor. He will study all this and he will understand what intervention you tried. They will just continue your case. They will not start a fresh case. उनको पता चल गया IQ लेवल ऐसा है, अब उनको पास अलग टेक्निक होता है. There are so many counseling techniques, behavior modifications. There are many more techniques which the psychologist can do, which are beyond your capacity. So that is called referral. Now, transfer क्या है? Transfer और referral is very close. They are very much similar. Referral में you are taking the help of another professionals. Transfer में you are transferring this case to another agency. वहाँ दूसरा प्रोफेशनल हो सकता है. Sometimes you yourself may continue, but आपको पता चल गया this child will not be good in its school. ये स्कूल में ये child अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगी. अगर ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ का स्टैंडर्ड 100% सक्सेस, ये चाइल्ड तो नहीं हो सकता है. फिर यू कैन सजेस्ट द पेरेंट्स, ये स्कूल थोड़ा बदलाव ना, इसको स्कूल को चेंज करना पड़ेगा. दूसरा ट्रांसफर ऐसा है, देखो आपको स्कूल, आपके इसको अच्छी तरह ध्यान नहीं दे सकते. आप सुबह सुबह निकल जाते, आपका काम के लिए जाते हैं, इसको हॉस्टल में रखो जहाँ शायद इसका स्टडी अच्छा हो सकता है. इसको आपका वातावरण इतना अच्छा नहीं है पढ़ाई के लिए. सो चेंजिंग द एनवायरनमेंट, ट्रांसफरिंग द पर्सन फ्रॉम वन नेबरहुड, वन लिविंग सिचुएशन, one educational setting to another educational setting, that is called transfer. So transfer में क्या है, आप उसको पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ काम करेंगे, बताएंगे ये this child is not going to be effective in this environment. ये स्कूल में इसका स्टडी ठीक नहीं होगा, अगर इसने कुछ स्पेशल स्कूल में ट्रांसफ़र करो, वहाँ शायद ये अच्छा काम होगा.
वोकेशनल ट्रेनिंग में चेंज करो. ही इज वेरी गुड एट इंजीनियरिंग, ये शायद उसी लेवल में इसका ट्रेनिंग देना पड़ेगा. ये बहुत बड़ा कलाकार है, इसको फाइन आर्ट स्कूल में दे, इसका ट्रांसफर करो. सो द केस वर्कर विल आइडेंटिफाई द रियल पोटेंशियलिटी ऑफ द चाइल्ड. व्हाट इज द रियल वर्थ, व्हाट इज द रियल टैलेंट, जहां इनका जिंदगी बन सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करना केस वर्कर का काम है. फिर ऐसी वातावरण में ये चाइल्ड को ट्रांसफर करना, दिस इज ऑल्सो समटाइम ट्रांसफर इतना दूर हो जाता है, इसके साथ आपका इंटरवेंशन कंटिन्यू करना मुश्किल होगा. यू आर नाउ वर्किंग विद दिस स्कूल, यू आर द स्कूल सोशल वर्कर. आप इसके साथ काम कर दिया, आप ये स्कूल चेंज कर रहे, वहां दूसरा सोशल वर्कर के पास जाएगा. सो ट्रांसफर इज क्लोजिंग फॉर यू, बट कंटिन्यूइंग द केस in some other agency by some other professionals. So that is one type of termination of the case. So I have explained to you successful closing of the case, successful reference of the case, and successful transfer of the case. So these are the three types of termination of the case. Okay, sometimes termination आप refer कर दिया, आपने ट्रांसफर कर दिया, फिर आपका जिम्मेदारी, यू हैव टर्मिनेटेड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ना उसको फॉलोअप लेना जरूरत नहीं है, बिकॉज द चाइल्ड इज इन सेफ हैंड्स इन सम अदर प्रोफेशनल, सम अदर एजेंसी. दे विल टेक अप द फॉलोअप. मे बी यू कैन टॉक विद दर पेरेंट्स आफ्टर 6 months, कैसे है आपका बेटा बेटी नया एजेंसी में, नया प्रोफेशन के साथ इंप्रूव हो रहे क्या. दैट इज फॉर योर सेटिस्फैक्शन, इट इज नॉट रियली नेसेसरी. सो in some books, in some literature, you will find follow-up comes after termination. Okay, so that is just the understanding of that follow-up. The terminated from your end, but you take a follow-up for the well-being of the child. Child कैसा है, ये आपको भी अच्छा लगा. मैंने अच्छी प्रोफेशनल के पास, मैंने आई हैव ट्रांसफर्ड दिस केस सक्सेसफुली, आई हैव रेफर्ड टू एन प्रॉपर प्रोफेशनल. ये आपका सेटिस्फैक्शन के लिए एक आधा फॉलोअप ले सकते हैं. देन द फॉलोअप विल कंटिन्यू आफ्टर टर्मिनेशन. अदरवाइज टर्मिनेशन मीन्स टर्मिनेशन इन ऑल सेंस, बिकॉज यू आर गोइंग टू डील विथ न्यू केसेस. यू आर ए सोशल वर्कर, एक पर्सन को टर्मिनेशन, उसका केस पर कंप्लीट हो गया, दूसरा केस आपके मन में आ गया. नाउ यू आर एंगेज, यू आर ऑक्यूपाइड विद न्यू चाइल्ड, न्यू केस. यू डोंट हैव टाइम टू follow up the case which you have terminated from your end. So termination means termination of the follow up also. Follow up and evaluation comes before term. That is as per this scheme. So we have come to the end of today's lecture. So we have learned the 6 steps of the casework study, which means fact finding, continuous assessment analysis, which include the collateral interview, home visit, verification of the facts, visiting the school, workplace, neighborhood, interacting with other stakeholders, friends, and verifying the facts of the case. Third stage is psychosocial diagnosis, Nidan, clinical and social diagnosis, etiological diagnosis. It is a teamwork. It is teamwork with the teachers, with other professional doctors. If the case is of drug de-addiction, sometimes you may have to take the help of a addiction specialist, de-addiction therapist. उसके साथ आपको diagnosis करना है, and you will fix the goal. इसके साथ क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कितनी पर्यंत आपको इस केस को लेके जाना है. सो दैट्स ऑल कम्स इन डायग्नोसिस स्टेज, गोल सेटिंग. नाउ द 4th स्टेज इज इंटरवेंशन, उपचार, ट्रीटमेंट, द एक्चुअल वर्किंग विद द इंडिविजुअल, वर्किंग विद द पेरेंट्स, working with the teachers, working with environment, making changes in the environment, trying to make changes,
in the behavior of the children, motivating the child. This is all called the intervention. The fifth step is the follow-up. In the follow-up, you take feedback from the child, from the parents, from the teachers, third party, from all the stakeholders, and assess your own work. Evaluate the success or failure of your work. After assessing successfully or even not successfully, both are feedback, both are evaluation, either success or failure. In both the case, there is termination. So in the termination, if the case is not successfully handled by you, then it is referred to another professional, that is referral. Sometimes you suggest a transfer of this case from one agency to another agency, that is transfer. Otherwise, successfully completion. You have completed the case up to your satisfaction, up to the satisfaction of the child and the parents and the teachers. This is the termination, successful termination. So this way we have completed today's lecture, and tomorrow in the next lecture we will study the tools, the skills, techniques, roles, models, and other part of the syllabus. So wish you all the best. Don't forget to give your comments in the comment box, your questions, and I will attend to them in your chat box. Wish you all the best. Thank you very much.